Hi everyone, welcome to Hamid Smart Learning Hub. Guys, am I audible and visible? Please write on chat box, am I audible and visible? So today the day 2. Okay, first I will tell you about how to calculate TDS for salary. Salary के लिए TDS कैसे calculate करते हैं, and then I'll tell you about how to file TDS return for salaried employee. Okay. So do you know how to calculate TDS for salary? Yeah. Okay. So first to calculate tax, calculate salary, to calculate tax for every employee, first you have to compute the taxable income. Okay. And then you have to calculate tax on that taxable income. Okay. So suppose if you suppose आपका कंपनी में 100 employees है, so employer को क्या करना है? They have to calculate 100 employees taxable income. First compute करना है and then calculate tax on that taxable income. So यहाँ पर एक employee का taxable income है जिसका नेम है शुभ्रत ढोले. Okay. First you have to take the gross salary. ठीक है, gross salary means 12 months का salary. First you have to take the gross salary. तो इस employee का gross salary है 16,72,970. Okay. Then you have to deduct अंडर सेक्शन 1010, मतलब जो भी आपका अलाउंसेस है, अलाउंसेस के ऊपर यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 1010. ठीक है. सो इसका एम्प्लॉई का हाउस एंड लीव एनकैशमेंट है 1,04,000 एंड हाउस एंड अलाउंस का डिडक्शन 1,41,089. सो टोटल इज 2,45,089. सो यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम योर ग्रॉस सैलरी दिस टू अमाउंट. Okay, deduction under section 1010. So you have to know income tax. Okay, to calculate taxable income and tax liability, you should know income tax, 5 heads of income, deductions. Okay. So gross salary से आपको section 10 का 2 deduction लेस करना है, then आपका net salary आ जाएगा 14,27,881. And then you have to deduct standard deduction 50,000, जो हर एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस होता है, एंड प्रोफेशनल टैक्स, जो एक्चुअल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय वो आपको यहां से लेस होगा. देन नेट सैलरी आ जाएगा 13,75,551. ये है नेट सैलरी इनकम. ओके. एंड इफ यू हैव टेकन एनी हाउस बिल्डिंग लोन टू कंस्ट्रक्ट और परचेज योर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई बैंक से लोन लिया, देन यू विल गेट डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन का ऊपर आपका डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹2 लाख. ओके, अप टू ₹2 लाख आपका हर साल डिडक्शन मिलेगा. एंड ये जो डिडक्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का अंदर आएगा. ओके, या सेक्शन 24B, राइट. सो suppose your salary income is 10 lakhs. Okay. And interest on house property, मतलब house property loss is 2 lakhs. क्योंकि maximum you will get deduction 2 lakhs. So you can set up your house property loss from your salary income. So आपका net income आ जाएगा 8 lakhs. So अगर आपका house property का loss है, you can set up your house property loss फ्रॉम सैलरी इनकम सो दैट आपका नेट इनकम कम हो जाएगा. ठीक है. सो इस एम्प्लॉय का देखिए नेट सैलरी इनकम इज 13,75,551 एंड हाउस बिल्डिंग इंटरेस्ट इज minus 1,85,000. ओके. सो यू हैव टू डिडक्ट 1 लाख minus 1,85,000 फ्रॉम योर सैलरी इनकम. सो आपका नेट सैलरी, नेट जो इनकम कम हो जाएगा. ओके, 11,90,551. And after that you will आपको section 80C, 80D, 80CCD, 80U जितना भी आपका डिडक्शन है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, you will get deduction under chapter 6A. ओके. सो सेक्शन 80C में मतलब अगर आपका प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड,
then you will get deduction 1,50,000. ठीक है, अंडर सेक्शन 80C. सो आपका ग्रॉस सैलरी, सॉरी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इस एम्प्लॉय का है 2,13,293, बट मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C. ओके, या नेक्स्ट इज 80CCD, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस. अगर आपका एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है देन अनदर 50,000 आपको डिडक्शन मिलेगा. 80D मेडिक्लेम, और अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है देन मैक्सिमम यू विल गेट डिडक्शन 25,000. ओके, और भी बहुत सारी डिडक्शन है. अगर आपका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है देन 80E में आपको डिडक्शन मिलेगा. अगर अपना डोनेशन है देन 80G में आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके, सो इस एम्प्लॉय का ओनली ये तीनों इन्वेस्टमेंट है. वन इज 80C 1,50,000, 80CCD, एनपीएस एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस. ओके, सो ये जो नेट इनकम है, नेट इनकम से आपका ये तीनों डिडक्शन लेस हो जाएगा, देन आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 9,65,551. ये है टैक्सेबल इनकम. सो नाउ टेल मी, कौन सा स्लैब रेट में है इस एम्प्लॉय? 10%, 20%, 5%, 20% या 30% स्लैब रेट? कैन यू टेल मी? टैक्सेबल इनकम इज 9,65,551. सो कौन सा स्लैब रेट में है? 5%, 20% या 30%? 20%, क्योंकि taxable income is less than 10 lakhs. Okay, so now you have to calculate tax on this total taxable income. So as per slab rate, first 2,50,000 का ऊपर टैक्स होगा नील. नेक्स्ट 2,50,000 का ऊपर 5% which is 12,500. Okay, एंड बैलेंस जो है, मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम इज 9,65,551 माइनस 5 लाख. वाई 5 लाख? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंसिडर 2,50,000, 5 लाख मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया. ओके, तो बैलेंस जो है मतलब 4,65,551 का ऊपर 20% डिडक्शन इन टैक्स. 4,65,551 इंटू 20% विच इज 93,110. So total tax is 1,05,610. Okay, 1,05,610. And इसके ऊपर you have to add higher and ESES 4% आपको add करना है. Okay, higher and ESES at the rate 4%. So tax का 4%, 4,224. So total tax liability for this employee is 1,09,834. मतलब पूरा साल में 1,09,834 टैक्स पे करना है. ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस फॉर ईच मंथ? यू हैव टू डिवाइडेड टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय 12. ओके, व्हाई 12? क्योंकि 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर. सो 12 से डिवाइड करेंगे. सो हर मंथ एम्प्लॉयर has to deduct 9,153 per month. ओके, इस एम्प्लॉय का हर मंथ टीडीएस डिडक्ट होगा 9,153. देन जब पूरा 1 ईयर हो जाएगा देन इसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है 1,09,834 ये पे हो जाएगा. ओके, सो फॉर टीडीएस कैलकुलेशन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल टैक्सेबल इनकम एंड उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है पूरा साल में. How much tax you have to deduct, how much tax you have to pay, okay, and divided by 12. So per month इस एम्प्लॉय को कितना टीडीएस कटेगा? 9,153 करके टीडीएस डिडक्ट होगा. ओके, सो दिस इज, ये है प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस फॉर सैलरी एम्प्लॉय. सपोज आपका कंपनी में 100 एम्प्लॉयज है. सो एम्प्लॉयर को क्या करना है? एम्प्लॉयर हैज टू कैलकुलेट टीडीएस दिस वे. ठीक है, 100 एम्प्लॉयज का ऐसे कैलकुलेट करना है. सो जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल मंथ में एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांगेगा. ओके, मतलब कौन सा एम्प्लॉय का क्या इन्वेस्टमेंट है उसका ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट होगा. ठीक है, सो ये है टैक्स टीडीएस ऑन सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी. So if you don't understand clearly, you have to know income tax first. Income tax आपको जानना पड़ेगा.
सीखना पड़ेगा. So now I will show you how to file TDS return for salaried employee. Okay. So same way. First, you have to go to RPU, TDS RPU 4.5. Such as if your total taxable income is more than 50 lakhs, then surcharge होता है. Okay, 50 lakhs का नीचे कोई surcharge नहीं. So for salaried return, you have to select form number 24Q. Okay, last day I have shown you for other than salary or vendor. So form number 26Q, but for salary return, you have to select 24Q. Okay. Yeah, from financial year 23-24, new tax regime is a default tax regime. Okay. अगर आपको 7 lakhs तक you will get deduction, आपको कोई you don't need to pay any tax. बट अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट है देन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. So for salary return, you have to select form 24Q and click to continue. And then first आपको financial year select करना है. First you have to select the financial year. Suppose I want to file TDS return for 21-22 and quarter Q3. Okay, so मैंने financial year select किया and quarter select किया. Now you have to calculate TDS and PAN number. You have to write here TAN number and PAN number. Okay, TAN number and PAN number of deductee. And PAN number. Okay, then type of deductor you have to select. अगर आपको डिडक्टर कंपनी है देन सिलेक्ट कंपनी, अगर अदर देन कंपनी जो भी है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो मेरा कंपनी है, सो मैंने सिलेक्ट किया कंपनी. ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू फिल अप योर कंपनी डिटेल्स हियर, डिडक्टर डिटेल्स. ओके, फर्स्ट यू हैव टू फिल अप नेम. एंड गाइज मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, प्लीज ट्राई टू डू द होमवर्क. ओके, company name and branch or division. If you have any branch, then write yes. Agar koi branch nahi hai, then write nil. Then you have to fill up the company address, flat number, state and pin code. State, you have to select the state from drop down and pin code. Okay. Then has address changed since last return? No. हो गया. Next you have to fill up authorized signatory details. Authorized signatory means accounts manager, chairman, CFO जो भी है आपका authorized signatory, director. So you have to fill up authorized signatory name, designation and PAN number. Okay. PAN number. Okay, then designation and click on same as above. So ऊपर का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा. Next is had address change since last return? No. Has regular statement for form 24Q file for earlier period? So if you have filed your last quarter return, you have to select write yes and you have to write the receipt number here. Okay. So अभी मेरे पास receipt number नहीं है तो मैंने यहाँ पर no कर दिया. But when file your TDS return, you have to fill up. Okay. If you have filed your last quarter return, write yes and you have to write the receipt number here. Then click on save to save the details. So मेरा form number save हो जाएगा. Next is चालान. So you have to fill up चालान details. So ये Q3 का है. Q3 मतलब Q3 means कौन सा मंथ का चालान डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है गाइस? राइट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. Guys, if you want to learn income tax, you can join my income tax course also. Okay, so ये TDS course है, not possible to
explain income tax matters here. Okay. So you have to click on चालान and आपको यहाँ पर row add करना है. So click on add row and enter number of rows to be added. अगर आपको 3 चालान है, write 3 and okay. So 3 row add हो जाएगा. Okay. Now you have to fill up TDS amount, same as 26Q. BSR code, चालान date and चालान serial number. So first you have to fill up an Excel sheet. I have already told you. ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ का चालान का डिटेल्स है. ओके. सो टीडीएस अमाउंट, 3 months का टीडीएस अमाउंट, डेट ऑफ चालान, बीएसआर कोड एंड चालान सीरियल नंबर. ओके. यस, टीडीएस. टीडीएस का क्लास ही तो है आपका. कौन सा क्लास ज्वाइन किया खुशी? 3 days टीडीएस क्लास ज्वाइन किया ना. सो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ का टीडीएस. सो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. टीडीएस सेक्शन 4480 टीडीएस का नहीं है, वो इनकम टैक्स का है. सेक्शन 4480. So TDS column you have to write the TDS amount, okay, and then BSR code. BSR code. उसके बाद चालान सीरियल, चालान डेट, and चालान serial number. Okay. Presumptive taxation. And then minor head 200. Minor head you have to select 200. Okay. बस हो गया. Then just click on save to save the चालान details. And then you have to fill up the annexer 1 or deductee details. Okay. So first you have to fill up an Excel sheet. So वहां पर क्या डिटेल्स आपको चाहिए? फर्स्ट डिडक्टी नेम मतलब एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई पैन नंबर, सेक्शन कोड. ओके. सो सैलरी का सेक्शन इज 192. सो शॉर्टकट इज 92B. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन 92B, गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन 92A. उसके बाद पेमेंट अमाउंट मींस ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस सैलरी, एंड डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट एंड टीडीएस अमाउंट. ओके. तो अंडर चालान नंबर 1 आई हैव 8 रो. आपको 8 रो ऐड करना है क्योंकि मेरा 8 एम्प्लॉय है. अंडर चालान नंबर 2 आई हैव 8 रोज एंड अंडर चालान नंबर 3 आई हैव 8 रोज. ओके. सो जस्ट yeah, I'll share everything with you. So first आपको click on insert a row. Then चालान number 1 का अंदर number of deductee records to be added. So 8 deductee records I have to add. Under चालान number 2, 8, and under चालान number 3, 8. Okay. Then click on OK. बस हो गया. Now you have to fill up. First is section under which payment made. So आपको section देना है. So first you have to write an Excel sheet and salary का section is 92B. Okay. Then PAN of employee and name of employee. PAN of employee and name of employee. उसके बाद date of deduction and date of payment. Date of deduction. So date of deduction and date of payment should be same date. Okay. Same date आपको देना है. Then amount paid or credited means gross amount, मतलब gross salary. Okay. October, November, December month का gross salary. Then TDS amount. And surcharge and e-sales. So if you have no figure,
देन यू हैव टू राइट 0. अगर फिगर नहीं है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा. बस हो गया. ठीक है. नो और कुछ यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग. ओके. नाउ क्लिक ऑन सेव and save the annexer 1. हो गया. Next guys, please tell me what is the next step. Form चालान and annexer 1 मैंने fill up कर लिया. Then please tell me what is the next step. I have already shown you on day 1. What is the next step? Right. Create file. So you have to click on create file. देखिए, please provide email ID, valid email ID. Same मैंने गलती किया. You have to write here email ID. Mobile number. Okay. Click on save and save the details. हो गया. Next, click on create file and you have to download the Chalan input file, okay, from NSDL site. So for that you have to go to NSDL portal. And under services, Chalan status inquiry. For taxpayers, 10 based view, click on 10 based view and you have to first provide the 10 number of your deductor, क्योंकि 10 number का through NSDL आपका चालान input file download करेगा. So you have to write your deductors 10 number here and from and to. So from में कौन सा date देना है guys? From and to में first tell me from में कौन सा date देना है? First चालान date, right? First चालान date. So quarter का अंदर October is my first चालान and date is 6/11/21. Six 11/21. And two में you have to write last चालान date. So December month is my last चालान and date is 6/22. 6/22. Okay, and then write the captcha code here. And click on download चालान file. So CSI file download होगा. ये मेरा चालान input file. So you have to copy the CSI file. And also you have to create a folder. So मैंने एक folder create कर रहा हूँ आज का date में 23/4/23 and I have pasted the चालान input file within this folder. Okay, इसका अंदर चालान input file paste कर दिया. Then you have to go here चालान input file name with path. So click on browse and go to that folder where I have just pasted चालान input file. Okay, उस folder का अंदर आपको जाना है जहां पर मैंने चालान इनपुट फाइल पेस्ट किया. नेक्स्ट इज एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाइल. इसमें कौन सा पाथ देना है गाइस? कौन सा पाथ यहाँ पर देना है? एरर और अपलोड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाइल फोल्डर, ये न्यू फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया उसका पाथ देना है, राइट? ठीक है. देन क्लिक ऑन वैलिडेट and file validated successfully. Okay, and now you can submit through offline or online. Okay, so ये है procedure. So 26Q and 24Q more or less same, but when you have to file Q4 return, 24Q Q4 जब आपको return file करना है तब देखिए और एक annexer 2 add हो जाएगा, salary details. Okay,
क्योंकि एनेक्सर 2 मीन सैलरी डिटेल्स। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को आफ्टर फाइलिंग ऑफ Q4 रिटर्न यू हैव टू इश्यू फॉर्म 16। टीडीएस सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉय को इश्यू करना है फॉर्म 16 और एनुअली इश्यू होता है। ओके, आफ्टर फाइलिंग Q4 रिटर्न यू हैव टू इश्यू टू एवरी एम्प्लॉय फॉर्म 16। टीडीएस सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना है एनुअली। फॉर्म 16 जो है एनुअली आपको जनरेट होता है। ओके, सो फॉर्म 16 का दो पार्ट है, एक है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, पार्ट ए में क्या रहता है? पार्ट ए में हाउ मच टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। चारों क्वार्टर में कितना टीडीएस डिडक्ट किया एम्प्लॉयर, उसका डिटेल्स रहता है पार्ट ए में। एंड पार्ट बी में एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल्स रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू फिल अप एनेक्सर 2 और सैलरी डिटेल्स। आपको Q4 रिटर्न में आपको एनेक्सर 2 फिल अप करना है, देन आपका फॉर्म 16 जनरेट होगा, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। सो लेट्स ओपन अ फॉर्म 16 फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू फिल अप सैलरी डिटेल्स। तो फर्स्ट मैं एक फॉर्म 16 ओपन करूंगा, फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, दो पार्ट होता है फॉर्म 16 का। सो ये है एक एम्प्लॉय का फॉर्म 16 पार्ट ए। ठीक है, सो फर्स्ट आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर आता है। देन आपका यहाँ पर जो आएगा असेसमेंट ईयर 21-22, दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 मेरा फिनेंशियल ईयर। ओके, एंड देन देखिए चारों क्वार्टर में Q1, Q2, Q3, Q4 चारों क्वार्टर में कितना टीडीएस डिडक्ट किया? Q1, Q2, Q3, Q4 में टोटल टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इज 7,17,162। सो जो एम्प्लॉय है मुनिराज गुणशेखरन, इस एम्प्लॉय का टोटल टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर चारों क्वार्टर में कितना? 7,17,162। ठीक है, tomorrow I'll show you how to download and generate form 16, form 16A and TCS certificate. So ये एंड नीचे देखिए जिस चालान का थ्रू डिपॉजिट किया एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का जो टीडीएस डिडक्ट किया थ्रू चालान, सो 12 मंथ में 12 मंथ्स का चालान का डिटेल्स रहता है, जैसे टीडीएस अमाउंट, बीएसआर कोड, चालान डेट एंड चालान सीरियल नंबर। ओके, एंड नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम। सो ये है फॉर्म 16 पार्ट ए। सो फॉर्म 16 पार्ट ए, व्हाट यू विल गेट कितना टीडीएस डिडक्ट एंड डिपॉजिट किया बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, नहीं 26 क्यूबी में यू डोंट रिक्वायर 10 नंबर। ओके, अपने जो प्रॉपर्टी बायर जो है, बायर को जब सेलर को पे करना है टीडीएस काट के पे करना है थ्रू चालान नंबर 26 क्यूबी। ओके, वो 10 बेस्ड चालान होता है, सॉरी पेन बेस्ड चालान होता है। ओके, 26 क्यूबी पेन बेस्ड चालान, नॉट 10 बेस्ड। सो गाइस हो गया फॉर्म 16 का पार्ट ए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं व्हाट फॉर्म 16 पार्ट बी। सो ये फॉर्म 16 पार्ट बी। ओके, फर्स्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का नेम सेम एम्प्लॉय का है ये, एंड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 21। ओके, या उसके लिए भी टीडीएस सर्टिफिकेट होता है 16B। ओके, फॉर्म 16B वो भी आपको ट्रेसेस में जाकर आपको इशू करना पड़ता है। सो गाइज ये है डिटेल्स ऑफ सैलरी। क्यों मैंने क्या बोला था, पार्ट बी में आपका एम्प्लॉय का टोटल सैलरी स्ट्रक्चर देना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज ग्रॉस सैलरी। जो ग्रॉस सैलरी है 32,44,788, एंड देन यू हैव टू डिडक्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10। ओके, जो भी डिडक्शन है, ट्रैवल कंसेशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, सो जो भी इस एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा आपको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ओनली एजुकेशन अलाउंसेस का डिडक्शन है 1200। सो ग्रॉस सैलरी से आपको 1200 लेस करके नेट सैलरी आ जाएगा 32,43,588, एंड देन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स जो एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय व्हिच इज 2,400।
ओके, ये दो लेस करने के बाद आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आ जाएगा कितना, 31,91,188। ओके, नाउ अगर आपका कोई हाउस बिल्डिंग इंटरेस्ट है, इफ यू हैव टेकन एनी लोन फॉर योर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, आपका मैक्सिमम 2 लाख तक डिडक्शन मिलेगा। ओके, सो इस एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है 1,17,592। सो ये है हाउस बिल्डिंग, नहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम दिस असेसमेंट फिनेंशियल ईयर 2013 2023-24। पहले अप टू 22-23 फॉर न्यू टैक्स रिजिम कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, बट फॉर दिस फिनेंशियल ईयर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, या 50,000। ओके, सो गाइज इंटरेस्ट एंड हाउस बिल्डिंग जो है इस एम्प्लॉय का 1,17,592। सो यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, सैलरी इनकम से एडजस्ट होगा, देन आपका ग्रॉस टोटल इनकम कम हो जाएगा। 31,91 से माइनस 1,17,592 लेस होने के बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 30,73,596। देन चैप्टर 6A का डिडक्शन 80C to 80U। So इस एम्प्लॉय का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज 1,82,000, बट मैक्सिमम यू विल गेट डिडक्शन 1,50,000। ठीक है, और कोई डिडक्शन नहीं है इस एम्प्लॉय का। सो 1,50,000 लेस होने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम इज 29,23,596। Now you have to calculate tax on total taxable income. Okay, so ये 30% स्लैब रेट में है क्योंकि 10 lakhs का ऊपर इसका टैक्सेबल इनकम। सो आपका एज पर स्लैब रेट यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। ओके, फर्स्ट 2,50,000 का ऊपर नील, नेक्स्ट 2,50,000 का ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 lakhs का ऊपर 20% एंड बैलेंस का ऊपर 30%। सो टैक्स आ जाएगा 6,89,579। देन 4% ईसेज ऐड होगा, ये दो ऐड करने के बाद टोटल टैक्स पेएबल इज 7,17,162। अब देखिए फ्रॉम 16 पार्ट ए, how much TDS deducted and deposited? 7,17,162. And from part B, we will get total tax liabilities 7,17,162. Okay, so a form 16 part A and part B आपका एक साथ जनरेट होगा। Okay, so after filing of Q4 return, you have to generate form 16 part A and part B, and you have to issue to every employee within 15 days from your return. Okay, so now चलिए देखते हैं how to add salary structure। क्योंकि first you have to fill up annexure 2 salary details for each and every employee, and you have to file the TDS return, then आपका form 16 generate होगा। Okay, otherwise form 16 generate नहीं होगा। 15 days from TDS return filing last date। Okay, so first you have to go to annexure 2 or salary details, and you have to add a row। आपको add a row करना है to fill up। So suppose I have 8 employees, so enter number of rows to be added, और 8 लिखकर ओके कर दीजिए। So 8 row add हो जाएगा। Now you have to fill up। Okay, so चलिए देखते हैं how to fill up। If you have 200 employees, you have to fill up 200 employee salary details here। Okay, first you have to fill up an Excel sheet and just copy paste कीजिए। So I'll show you for one employee how to fill up। So first देखिए PAN number, you have to write the PAN number and name of employee। Okay, so first is PAN number। I'm taking data from form 16 part B so that you can understand कहाँ से ये आपको figure लेना है। So first is PAN number of employee, you have to write the PAN number। No, you have to file through, you can file through free software or you can file through paid software। Okay, so first आपको PAN number देना है and name of employee। So just I'm showing you one employee's details, so ऐसे आपको fill up करना है। Okay, and then name of employee, then deductee type। Okay, if your employee is a woman, then select woman।
If senior citizen मतलब 60 to 80 years age, then select senior citizen. If super senior citizen more than 80 years age, then select super senior citizen. And if main and age is less than 60 years, then select others. अगर कोई मेन है and जिसका age less than 60 years, then you have to select others. Okay? And then date from which employed and date to which employed. मतलब you have to write the first date of the financial year and last date of the financial year. Okay? So just double click here. So a calendar open हो जाएगा. Others means जिस employee का age, जिस employee is a man, not woman, man. Okay, आदमी. And जिसका age is less than 60 years, then others. Okay. And आपको यहाँ पर फर्स्ट फिनेंशियल ईयर का डेट देना है. तो मेरा फर्स्ट डेट इज 1 April 20. 1 April 20. And date to which employed with the current employer. So यहाँ पर last date of the financial year. If some employee has retired during the year, so last date of his retirement का last date यहाँ पर देना है. ठीक है. ओके 1 April 20 से लेकर 31 March 21. देन फर्स्ट क्या होता है फॉर्म 16 पार्ट बी में फर्स्ट क्या आता है ग्रॉस सैलरी. ओके सो यू हैव टू फिल अप ग्रॉस सैलरी देयर सो दैट आपका फॉर्म 16 में फिगर आएगा. ठीक है. सो फर्स्ट इज ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी कहां पर लिखना है कॉलम नंबर 59. ग्रॉस सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन्ड इन 17.1, 17.2 एंड 17.3. सो 17.1 में ग्रॉस सैलरी प्रॉफिट परक्विजिट इज 0 and profit and loss salary 0. ठीक है. नेक्स्ट आपका सेक्शन 10.10 का डिडक्शन आएगा 1200 जो आपको लेस करना है. तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ट्रैवल कंसेशन यहाँ से सेक्शन 10 स्टार्ट होता है. ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंट इफ यू हैव नो फिगर देन यू हैव टू राइट 0. डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी राइट 0. अगर आपको फिगर नहीं है देन आपको 0 लिखना है. Agar if you have a figure, then you have to write the deductible amount. Commuted pension, write 0. Cash equivalent to leave salary 0. House rent allowance 0. And others जो है amount of any other exemption यहाँ पर you have to write 1200. Okay, so total deduction under 1010 1200. Then आपका net salary कितना आ जाएगा 32,43,588. Okay, 32,43,588. Then you have to deduct standard deduction 50,000 and P-tax 2,400. 16 IA and 16 Roman 3. So standard deduction is 50,000 and P-tax 2,400. Okay. So आपका net income chargeable under the salaries 31,91,188. 31,91,188. Now, if you have any HBL interest, you have to deduct. Okay. Section 10 means जो employer जो आपको क्या बोलते हैं उसको अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं ना अलाउंसेस के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके. एंड यहाँ पर देखिए इनकम और एडमिसिबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय. सो इफ यू हैव एनी हाउस प्रॉपर्टी लॉस यू हैव टू राइट हियर. सो इस एम्प्लॉय का HBL इंटरेस्ट इज -1,17,592. तो यू हैव टू राइट द फिगर हियर. यहाँ पर आपको माइनस फिगर में लिखना है इनकम और एडमिसिबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय. ओके. देन आपका नेट जो इनकम कम हो जाएगा 30,73,596. 30,73,596. देन चैप्टर 6A का डिडक्शन. ओके. जो भी इस एम्प्लॉय का इन्वेस्टमेंट है यू हैव टू फिल अप. फर्स्ट इज ग्रॉस अमाउंट एंड डिडक्टेबल अमाउंट. सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू column number
कलम नंबर 70 से देखिए चैप्टर 6 स्टार्ट होता है. 80C ग्रॉस अमाउंट डिडक्टेबल अमाउंट, 80CCC ग्रॉस अमाउंट डिडक्टेबल अमाउंट. तो सबका ग्रॉस अमाउंट एंड डिडक्टेबल अमाउंट रहेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द ग्रॉस अमाउंट एंड मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा कितना? 1,50,000. ओके, या नॉट इंडिविजुअली. फर्स्ट आपको एक एक्सेल शीट में फिलअप कीजिए एंड कॉपी पेस्ट कीजिए एक साथ. ओके, एंड 80CCC अगर कोई कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, if you have no figure then write yes, write 0 gross and deductible amount. 80CCD1 deduction in respect of contribution by taxpayer to notified pension fund, write 0. Okay, deduction in respect of 80CCD1B NPS अगर फिगर नहीं है तो write 0. Next is 80D. If you have any medical insurance premium, suppose आप total पूरा साल में आपका premium is 35,000, so you have to write under gross amount 35,000, but deductible amount maximum 25,000. You will get deduction. Okay, so if you have no figure, write 0. Agar if you have taken any loan for your higher education, then interest on loan taken for higher education आपको 80E में deduction मिलेगा. If you have no figure, then write 0. If you have donate, अगर आपका डोनेशन है, डोनेट किया है, then 50% और 100% डिडक्शन मिलता है. ओके, अंडर सेक्शन 80G. एक है ग्रॉस अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट एंड डिडक्टेबल अमाउंट. इफ यू हैव नो फिगर देन राइट 0. 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक, अगर फिगर नहीं है तो राइट 0. ओके, बस हो गया. देन मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 29,23,596. So total taxable income 29,23,596. Now you have to calculate tax on total taxable income. No, if your total taxable income is up to 5 lakhs, then you will get rebate under section 87A. Okay, अगर 5 lakhs का ऊपर taxable income है, then rebate नहीं मिलेगा. ओके, सो इसका जो 30% स्लैब रेट में है, मतलब टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर स्लैब रेट. सो टोटल इनकम टैक्स कितना आएगा? 6,89,579. ओके, 6,89,579. सरचार्ज में 0. हेल्थ एंड ईसेज 4% ऐड होगा ऑन इनकम टैक्स, 4%, विच इज 27,583. दो ऐड करने के बाद तो नेट टैक्सेबल इनकम 7,17,162. ओके, 7,17,162. And how much TDS deducted by employer? 7,17,162. टोटल TDS कितना डिडक्ट किया? Total amount of tax deducted at source by the current employer 7,17,162. So total tax liability 7,17,162 and TDS deducted by employer 7,17,162. Then shortfall and excess में आपको 0 आ जाएगा. Okay, so you have to fill up all the details like this. ऐसे आपको fill up करना है and आपका save करके you have to file the TDS return like Q3. जैसे मैंने Q3 किया, इसका भी same way में करना है. जस्ट एक्स्ट्रा क्या है, आपको एनेक्सर 2 फिलअप करना पड़ेगा. इफ यू हैव नॉट फिल्ड अप देन आपका फॉर्म 16 नॉट बी जनरेटेड. ओके, क्योंकि फॉर्म 16 का 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो टू जनरेट फॉर्म 16 पार्ट बी यू हैव टू फिल अप एनेक्सर 2 हियर व्हाइल फाइलिंग योर Q4 रिटर्न. ओके, इफ एक्सेस डिडक्टेड देन आपका रिफंड मिलेगा जब व्हेन यू हैव फाइल्ड योर TDS रिटर्न, सॉरी व्हेन यू हैव फाइल्ड योर ITR रिटर्न, देन आपको रिफंड मिलेगा. Okay, so hope you understand guys. Now I will tell you about traces, मतलब TDS पोर्टल. जैसे इनकम टैक्स का पोर्टल है incometax.gov.in,
TDS का भी पोर्टल है tdscpc.gov.in। तो फास्ट आपको एंड ट्रेसेस में लॉगिन करने के लिए एक ही क्राइटेरिया है। ट्रेसेस में लॉगिन करने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, फास्ट यू हैव टू फाइल योर TDS रिटर्न वंस। आपको फास्ट एक बार TDS रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू लॉग इन ट्रेसेस। ओके, एक बार रिटर्न फाइल कीजिए TDS रिटर्न, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट यूजर आईडी पासवर्ड इन ट्रेसेस। ओके, तो सपोज मेरा TDS रिटर्न फाइल हो गया, नाउ आई वांट टू लॉग इन एज ए न्यू यूजर। So you have to click here, register as new user पर आपको क्लिक करना है। Okay, you have to click here, register as new user, and then please select type of user. So आपको deductor select करना है। Why deductor? क्योंकि I am doing all these things on behalf of my deductor, on behalf of my company, on behalf of my partnership firm, on behalf of my society. Okay, so you have to select type of user, आपको deductor select करना है। और वो जो 26 QB था ना, जो someone is asking 26 QB, उसके लिए आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करके आपको लॉगिन करना है। बट डिडक्टर के लिए जो आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ डिडक्टर, सो आपको डिडक्टर सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। ओके, एंड देन यू हैव टू राइट योर 10 नंबर हेयर, डिडक्टर का 10 नंबर एंड कैप्चा कोड। ठीक है, so write your 10 number here। मेरा ये नहीं होगा क्योंकि I have already registered, तो next step नहीं आएगा। I will show you through e-tutorial। okay, so first मैंने 10 number दे दिया, I have written 10 number and verification code and click on proceed। so मेरा your account has been activated, so I have already registered in traces, so next step नहीं आएगा, इसलिए I will show you through e-tutorial। so let's open e-tutorial। चला गया। and I will share with you this e-tutorial। okay, after the class आपको जब login करना है, you have to follow the steps। okay, so मैंने first क्या दिखाया था, first you have to go to first you have to go to tdscpc.gov.in, मतलब TDS पोर्टल में जाना है, then click on login। okay, login पर register as new user पर क्लिक कीजिए, then आपका ये सिलेक्ट टाइप ऑफ यूजर सिलेक्ट करना है, जो आपको डिडक्टर सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। देन यू हैव टू राइट योर 10 नंबर, डिडक्टर का 10 नंबर देना है एंड वेरिफिकेशन कोड देना है। ओके, मैंने आपको दिखाया एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर लास्ट रिटर्न। आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल किया, लास्ट रिटर्न व्हिच यू हैव फाइल्ड, you have to fill up the details of your last return। क्या details required? First is token number और receipt number देना है आपका, जो आपने last return file किया। okay, and you have to provide the details of a चालान details। मेरा suppose 3 चालान है, so any one within 3, any one एक चालान का details आपको देना है, BSR code, चालान date, चालान serial number and चालान amount। एंड इस चालान का अंदर 3 वेंडर का पैन नंबर एंड TDS अमाउंट यू हैव टू पुट हियर एंड क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। सपोज मैंने जो रिटर्न फाइल किया, सपोज ये है मेरा चालान नंबर, सो सपोज आई वांट टू प्रोवाइड द चालान नंबर फॉर अक्टूबर, सो अक्टूबर का चालान नंबर यू हैव टू प्रोवाइड एंड देन विद इन दिस अक्टूबर यू हैव टू फिल अप 3 डिडक्टिव्स पैन नंबर एंड TDS अमाउंट। मतलब ये है मेरा चालान नंबर 1। ओके, ये है चालान नंबर 1, राइट। चालान नंबर 1 का डिडक्टिव डिटेल्स यू हैव टू फिल अप एनी 3 डिडक्टिव्स पैन नंबर
and TDS amount. Okay, any three deductees PAN number and TDS amount you have to write here. PAN number and TDS amount and click on proceed button. Okay, then next you have to fill up your deductor details. जो भी आपका next करके आएगा you have to fill up. First is category of deductor, whether it is company, partnership firm, जो भी है you have to fill up the category. Then PAN of deductor, company का PAN number देना है. PAN of authorized signatory, जो भी authorized signatory है, अगर director है, you have to write the PAN number of authorized signatory and date of birth of authorized signatory. Okay, and designation of authorized signatory. Are you an employee of a deductor? जो authorized signatory है, क्या वो employee है? अगर है तो yes करना है. अगर कोई consultant है, then no करना है. Okay. Then you have to fill up your company's address. जो भी आपका आएगा, you have to fill up. Flat, city, and state, and PIN code. Then mobile number, you have to fill up mobile number, alternate mobile number, email ID, alternate email ID, you have to write. Okay, जो आपको आएगा, you have to fill up. Then click on next, and then you have to write the user ID, okay, and password and confirm password. जो user ID आपको देना है, enter the user ID and then enter the new password and confirm your new password. Okay, then click to continue. Create file पर click कीजिए. After that, activation link and code have been sent to your email address and mobile number. Okay, activation code आ जाएगा. Activation link and code आपका email ID and mobile number पर चला जाएगा. You have to open the activation code within 48 hours. Okay, activation code को open कीजिए and you have to write, वो आपको वहां पर user ID देना है and code sent through email. Email में एक code आएगा. You have to put that code here and code sent through SMS. SMS का through जो code आएगा, वो code आपको यहाँ पर देना है and click on submit. ठीक है, then activation successful हो जाएगा. ठीक है, and again आपको login करना है and आपको जो user ID आपने दिया, you have to put the user ID here. जो password आपने select किया, you have to write the password here, PAN number of deductor and verification code देने के बाद you have to log in. Okay, so after the class I will share with you this PPT, this e-tutorial. आपको traces में login करना है step by step जो PPT में है. So now I want to log in traces. मैंने traces में login करूंगा. So first you have to go to tdscpc.gov.in. Okay, then click on login. And जो user ID आपने दिया, user ID यहाँ पर देना है. जो password आपने select किया, you have to write the password here and 10 of deductor. And verification code. And then click on login. Sorry, एक मिनट log out हो गया. Okay, so मैंने traces में login कर लिया. First is dashboard. Dashboard में क्या रहता है? Dashboard में देखिए नीचे है outstanding demand. So जो भी आपका outstanding demand है, you will see during dashboard and click on outstanding demands. Then you can find financial year wise outstanding demand. Okay, 22-23 का 14,260, 21-22 का 2690. Click on financial year, then you will see quarter wise outstanding demand. Q2 में demand is 12,660, Q3 में demand is 1,600. Okay, so ये है आपका outstanding demand. To see your outstanding demand, you have to click on dashboard and click here, then you can find outstanding demand. Okay, so अब आपका demand आया है, then आपको क्या करना है? You have to see the outstanding demand. क्यों आपके पास demand आया है? Okay, so to see your outstanding demand or to know your outstanding demand, आपको justification report download करना है. You have to download the justification report to know your outstanding demand reason. क्यों जो मेरा
22-23 Q2 26 Q में जो आउटस्टैंडिंग डिमांड आया है 12,660, फर्स्ट आई हैव टू नो क्यों मेरे पास डिमांड आया है. ओके, तो रीजन जानने के लिए यू हैव टू डाउनलोड एंड जनरेट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट फास्ट. ओके, सो कहां से डाउनलोड करते हैं, देखिए फर्स्ट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम डैशबोर्ड एंड रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड, और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर अंडर डिफॉल्ट रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड. सो फास्ट काम आपका क्या है, अगर आपके पास कोई नोटिस आएगा, फास्ट डाउनलोड एंड जनरेट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट टू नो योर डिमांड डिटेल्स. ओके, सो लेट्स डाउनलोड. सपोज आई वांट टू नो फॉर 22-23 Q2 में मेरा जो 12,660 नोटिस आया है उसका रीजन क्या है. ओके, सो गो टू डिफॉल्ट एंड गो टू रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड एंड देन सिलेक्ट द फिनेंशियल ईयर. Financial year है 22-23. Select the quarter. Quarter is Q2 and form type 26Q. जिस क्वार्टर का जिस फॉर्म टाइप का आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना है, यू हैव टू पुट दैट फिनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड फॉर्म टाइप. ओके, देन क्लिक ऑन गो एंड नाउ यू हैव टू KYC थ्रू. आपका KYC वैलिडेट करना है. अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड है, यू हैव टू पुट द डिजिटल सिग्नेचर इन योर लैपटॉप या डेस्कटॉप का USB पोर्ट में डालना है एंड वैलिडेट DSC पर क्लिक कीजिए. जिसका नाम जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम पर सिलेक्ट कीजिए. क्लिक ऑन साइन एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द पासवर्ड. DSC का एक पासवर्ड होता है एंड क्लिक ऑन ओके. सो आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड. द फाइल विल बी अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन. सो मेरा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का रिक्वेस्ट चला गया. नाउ यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम download section. Okay, so go to download section and go to requested download, view all. देखिए 22-23 Q2 26Q justification report status क्या है, submitted. So अभी मैंने submit किया. When submitted जब available हो जाएगा, so it took maximum 1 hour time फ्रॉम सबमिटेड टू अवेलेबल होने में आपका 1 ईयर टाइम लगता है मैक्सिमम. तो जब आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा, यू हैव टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन HTTP डाउनलोड. सो आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा. ओके, सो फास्ट आपने रिक्वेस्ट डाला, स्टेटस पर सबमिटेड रहेगा. यू हैव टू वेट मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर टाइम. तो विद इन 1 आवर का अंदर आपका ये सबमिटेड अवेलेबल हो जाएगा. देन यू हैव टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन HTTP डाउनलोड. सो आपका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा. ओके, नाउ यू हैव टू अनजिप. आपको इसे अनजिप करना है. सो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए एंड एक्सट्रैक्ट. सो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है. जस्टिफिकेशन रिपोर्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है. यू हैव टू प्रोवाइड द पासवर्ड टू ओपन जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जिप फाइल. ओके, सो पासवर्ड क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट JR, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का JR अंडरस्कोर दीजिए एंड 10 नंबर. ओके, कैपिटल लेटर में यू हैव टू राइट योर डिडक्टर्स 10 नंबर. कैपिटल लेटर फर्स्ट ऑन कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक ऑन कीजिए, देन JR अंडरस्कोर 10 नंबर अंडरस्कोर फॉर्म नंबर. यहां पर देखिए लिखा है फॉर्म नंबर 26Q अंडरस्कोर क्वार्टर नंबर Q2 क्वार्टर Q2 अंडरस्कोर फिनेंशियल ईयर व्हिच इज 2022-23 2022-23 एंड ओके. सो देखिए अनजिप हो गया. ओके, तो पासवर्ड क्या होगा, आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स JR अंडरस्कोर योर 10 नंबर अंडरस्कोर योर फॉर्म नंबर. फॉर्म नंबर मीन्स 26Q और 24Q. ओके, जो भी आपका डाउनलोड करना है. अंडरस्कोर क्वार्टर, जिस क्वार्टर का आपका करना है, अंडरस्कोर फिनेंशियल ईयर. ओके, सो ये है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का पासवर्ड. नाउ देखिए मेरा अनजिप हो गया एंड नाउ लेट्स ओपन. सो देखिए ओपन हो गया, बट व्हाट इज दिस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इसमें क्या लिखा है. राइट, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस TXT फाइल, ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है,
you have to convert this text document to Excel file. आपका justification report का Excel utility का through you have to download Excel utility of justification report so that you can understand your demand. Okay, first मैंने unzip किया, text document generate हुआ. Next step क्या है? You have to generate through justification report generation utility के through आपको text document से Excel में convert करना है इसको. Okay, so utility कहाँ पर मिलेगा? You have to go to download and click on requested download. यहाँ पर देखिए click here to download the utility. So you have to click here and put the captcha code. ये क्या है? 388 या 3B8? Yeah, and download traces utility. So देखिए these are traces utility. फर्स्ट जो है फॉर्म 16 पार्ट ए और फॉर्म 16A ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर. मतलब विद दिस कन्वर्टर यू कैन डाउनलोड फॉर्म 16 पार्ट ए और फॉर्म 16A. ओके, नेक्स्ट जो है फॉर्म 16 पार्ट बी ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर. मतलब विद दिस कन्वर्टर यू कैन जनरेट फॉर्म 16 पार्ट बी, जो टुमारो आई विल शो यू. नेक्स्ट 27D पीडीएफ कन्वर्टर. मतलब विद दिस कन्वर्टर यू विल जनरेट TCS certificate. 27D means TCS certificate. And ये है traces justification report generation utility. So with this utility, you can download, you can generate justification reports Excel utility. So मैंने इसको download किया. Okay, you have to click here to download the justification report generation utility. Zip file download हो गया. Now you have to unzip. आपको इसे unzip करना है. Unzip हो गया. Now you have to just right click and go to properties and यहाँ पर आपको unblock करना है. Block रहता है. You have to tick on unblock and apply. Okay. Then दोबारा डबल क्लिक करके ओपन कीजिए. So ये है मेरा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट यूटिलिटी, जिसका थ्रू मुझे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को एक्सेल में कन्वर्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट क्या लिखा है? सिलेक्ट द डाउनलोडेड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट .txt फाइल. मतलब यू हैव टू गो टू हेयर, एंड जो मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउन अनजिप किया था उसका पाथ मेरा वहां पर देना है. So click on browse and you have to put the path of justification report text document. ये था मेरा justification report and ये है text document जो मैंने unzip किया था. Okay, then click on generate report. अब देखिए Excel utility generate हो रहा है. हो गया? So now go to that folder. जस्टिफिकेशन रिपोर्ट. देखिए पहले मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, अब एक्सेल आ गया. नाउ डबल क्लिक टू ओपन. सो ये मेरा डिफॉल्ट समरी कितना था मेरा? 12,660. क्यों डिमांड आया है? देखिए यहाँ पर लेट फाइलिंग फी है 7,300. ओके, लेट फाइल किया. एंड यहाँ पर देखिए शॉर्ट पेमेंट इज 504052. शॉर्ट पेमेंट है. इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट. ओके, देन क्लिक ऑन लेट फाइलिंग. ऐसे डिटेल्स आएगा. 200 रुपीज पर डे लेट फाइलिंग फी. डिले इन फाइलिंग 44 डेज. टोटल लेट फाइलिंग फी था मेरा 8,800. ऑलरेडी आई हैव पेड 1,500. सो नाउ बैलेंस कितना पे करना है? 7,300. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट पेमेंट. सो इनसफिशिएंट बैलेंस ऑफ चालान में बैलेंस नहीं है, इसलिए 4052 का नोटिस आया है. शॉर्ट पेमेंट. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट. ओके, जो लेट पेमेंट किया इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट है 529.50. सो ये है डिफॉल्ट का समरी. सो टू नो योर डिफॉल्ट अमाउंट यू हैव टू डाउनलोड एंड जनरेट जस्टिफिकेशन रिपोर्ट. ओके, एंड टुमारो आई विल शो यू कैसे ये लेट फाइलिंग लेवी पे करते हैं, हाउ टू पे इंटरेस्ट एंड हाउ टू फाइल रिवाइज रिटर्न, हाउ टू सपोज आपका पैन एरर है, हाउ टू रेक्टिफाई इट,
if you want to edit your deductee, how to rectify, if you want to add new deductee, if you want to add challan details, कैसे आपको करना है, tomorrow I'll show you everything in live. Okay, so tomorrow I'll show you how to download and generate form 16, form 16A and TCS certificate, and how to file revised return in various situations. ठीक है? So justification report हो गया. Hope you understand. Next is statement or payments and statement status. If you want to know your statement status, कब आपने return file किया, अगर आपको जानना है, then click on statement status. Select the financial year. Suppose I want to know for financial year 22-23 Q3 and 26Q. इसका return मैंने कब file किया. Okay, then click on view statement details. Now here you go. Date of filing 3rd February 23. Regular return का मैंने file कब किया, 3rd February 23. And correction means revised return. These are revised return date. Okay, so if you want to know your statement status, you can check from here. Next is challan status for statement. Suppose if you want to know for a particular quarter, if you want to know your challan status, suppose आपने challan pay किया but you forgot your challan details, so you can recover your challan details from here. Okay, so you have to go to statement payments and click on challan status for statement. Select the financial year, जिस financial year को आपको देखना है. Select the quarter, suppose Q3. Select the form type 26Q. अगर vendor का है, select 26Q, Q3 and 22-23. Then click on go. Now देखिए यहाँ पर BSR code, date of deposit, चालान serial number, चालान amount पूरा आ गया. Okay, so चालान अगर आपको misplace हो जाए, then you can find your चालान details from traces. Clear, guys? Is it interesting? Class is interesting or boring? Class is interesting or boring, guys? Please let me know. Okay. Thank you. Next is PAN verification. What is this? Suppose if you want to know any vendor's PAN details or any employee PAN details, whether it is correct or not, PAN is correct or not. So you have to go to statement, payments and PAN verification. And जिसका PAN number आपको check करना है, put that vendor or employee's PAN number here. Okay, उसका PAN number दीजिए. अगर vendor है form 26Q, अगर employee है form 24Q. ठीक है, then click on go. So उसका name यहाँ पर आ जाएगा, रंजन दास. If your PAN number is wrong, then यहाँ पर not available बोलकर आ जाएगा. Then you have to check to your vendor or employee, please provide the correct PAN. Okay, so if you want to check PAN, then go to PAN verification and check. Next is declaration for non-filing of statement. ये क्या है? Suppose for financial year 22-23, you have filed TDS return for Q1, Q2 and Q3. But you have not filed Q4 return क्योंकि you have not deducted any TDS from any vendor. आपने कोई TDS deduct नहीं किया, इसलिए आपका चालान नील है, तो रिटर्न कैसे फाइल करोगे? Okay, so in that case you have to file nil TDS declaration, आपको देना पड़ेगा from traces. Though it is not mandatory नहीं है, but आपके पास नोटिस आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा why you have not filed your Q4 return. Okay, so if you have not deducted any TDS, then you have to file nil non-filing declaration, आपको देना है. Okay, so let's check how to do that. इसके लिए you have to go to under statement or payments, go to declaration for non-filing of statement and select the financial year. Suppose 22-23, select the quarter, suppose Q4, select form type 26Q. Now you have to give the reason. क्या reason है आपका non-filing declaration देने का, क्या reason है? जो reason यहाँ पर है, you have to select any reason. Not liable to deduct for the selected statement period. कोई डिडक्ट नहीं है, नॉट लायबल टू डिडक्ट. नो पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू डिडक्टी, कोई पेमेंट नहीं किया किसी को. टेम्पोरली और बिजनेस क्लोज, परमानेंटली बिजनेस क्लोज, पेमेंट बिलो थ्रेशोल्ड टू डिडक्टी, ब्रांच शिफ्टेड और एनी अदर रीजन.
सपोज मेरा रीजन है पेमेंट बिलो थ्रेशोल्ड टू डिडक्टिव, मतलब हर सेक्शन का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे 194C का 30,000, 194J का भी 30,000, 194 कमीशन जो है 194H का 15,000. सो मैंने जो पे किया थ्रेशोल्ड लिमिट का नीचे है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिडक्टेड एनी टीडीएस. ओके, सो मैंने टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया, दैट्स व्हाई आई नाउ वांट टू डिक्लेयर फॉर नॉन फाइलिंग. नॉन फाइलिंग का डिक्लेरेशन देना है मुझे. ओके, या टेल मी खुशी. सो मैंने यहाँ पर रीजन दे दिया एंड देन क्लिक ऑन ऐड स्टेटमेंट डिटेल्स. ओके, यहाँ पर दिखाई देगा फिनेंशियल ईयर, क्वार्टर, फॉर्म टाइप एंड रीजन मैंने क्या दिया. देन क्लिक ऑन प्रोसीड अगेन एंड यू हैव टू टिक 4 ऑप्शंस. जो 4 बॉक्स है यू हैव टू टिक ऑल 4 बॉक्सेस एंड क्लिक ऑन एग्री. देन आपका नॉन फाइलिंग का डिक्लेरेशन चला जाएगा. Okay, so if you have not filed your TDS return for a particular quarter, please provide the non-filing declaration. Otherwise, आपके पास नोटिस आ सकता है. प्रैक्टिकल मेरा एक जो पार्टी है उसका एक नॉन फाइलिंग का TDS रिटर्न फाइल नहीं किया था, इसलिए उसका नोटिस आया. Why you have not filed your TDS return? So it is better to file your declaration for non-filing statement. Okay. Next is request for alters challan correction. ये क्या है? Suppose after payment of challan, you saw that you have filed the wrong financial year, you have written the wrong section, you have written the wrong minor head or major head. आपने wrong financial year choose किया, wrong section select किया, wrong major head or minor head select किया, then you can change your challan. अब आपका चालान को करेक्ट कर सकते हो. बट एक बार रिटर्न फाइल हो जाएगा, देन यू कैन नॉट फाइल योर चालान डिटेल. सो यू हैव टू correct your challan before filing your TDS return. After filing of return, you cannot correct your challan details. Okay. क्या क्वेश्चन है? If aggregate limit is 1 lakh in 94C and payment made to contractor 1,20,000, then TDS deduct on 1,20,000. Okay, not 20,000. You have to deduct at the time of जब आपका 1,20,000 जब हो जाएगा, you have to deduct TDS on total amount. 1,20,000 का ऊपर you have to deduct, whether it is 2% or 1%. Okay. NRI professional fee section 195. Section 195 में आपको पे करना है. So guys, statement or payments, you have to go to request for alters challan correction. Then click on proceed. Again, click on proceed. And then you have to provide that challan details जिसका आपको change करना है. Okay? उस challan का details देना है. चलिए, let's do that. एक minute. So ये है चालान, जिस चालान को आपको चेंज करना है उसका डिटेल्स देना है. फर्स्ट इज BSR कोड, then date of deposit 29 March 23. Click here and select the date from here. क्या डेट था? सॉरी, एक मिनट गाइस, बैटरी इज रनिंग लो. एक मिनट. सो चालान का डेट क्या था? चालान डेट 29 मार्च 23. 29 मार्च 23. ओके. एंड चालान सीरियल नंबर, ये है चालान सीरियल नंबर.
एंड देन चालान अमाउंट क्या है 26,422 26,422.00 ओके यू हैव टू राइट इन ए 2 डेसिमल फिगर जब भी अमाउंट लिखना है 2 डेसिमल फिगर में आपको लिखना है 0.00 देन क्लिक ऑन गो सो देखिए एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 22-23 सपोज ये होगा 21-22 ओके सो मैंने कर दिया प्लीज एंटर द न्यू वैल्यू सो जो एक्चुअल होना चाहिए सपोज माय फाइनेंशियल ईयर शुड बी 21-22 मैंने यहाँ पर 21-22 लिख दिया माय एग्जिस्टिंग सेक्शन कोड आई वाज रिटन 194J बट सपोज ये होगा 194C so you have to write from drop down menu okay एग्जिस्टिंग मेजर है 21 मतलब नॉन कंपनी डायरेक्टरी था सपोज ए कंपनी डायरेक्टरी होगा सो राइट 20 मेजर हेड एग्जिस्टिंग माइनर हेड वाज 200 सपोज ए 400 होगा सो मैंने 400 कर दिया देन क्लिक ऑन सबमिट सब देखिए चेंज हो गया पहले था 22-23 अब 21-22 94J 90C हो गया 21-20 हो गया 200 400 हो गया देन क्लिक ऑन कंफर्म एंड क्लिक ऑन सबमिट देन आपका चालान करेक्ट चेंज हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ओके सो इफ यू वांट टू करेक्ट योर चालान डिटेल्स बट यू हैव टू डू दिस बिफोर फाइलिंग योर TDS रिटर्न okay guys and tomorrow I will tell you about this part the most important part how to download form 16A TCS certificate and request for correction मतलब आपको correction return कैसे फाइल करना है ऑनलाइन okay so don't miss tomorrow's class and now I will show you how to register your digital signature always try to register your digital signature okay portal के अंदर register कीजिए so to register your digital signature first you have to go to first you have to go to download and requested download and click here to download the utility पर click कीजिए put the captcha code and click on submit okay and यहाँ पर देखिए traces web signer setup v2.0 you have to click here so आपको यहाँ पर web signer का zip file डाउनलोड होगा after that आपको इसे unzip करके इंस्टॉल करना you have to install in your PC or laptop web signer utility इंस्टॉल करना है and your Java should be JRE8 okay so we have already installed Java I think JRE 32-bit only आपको Java JRE8 32-bit डाउनलोड करना है आपका वेब साइनर यूटिलिटी यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड कीजिए उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए एंड इंस्टॉल कीजिए ओके सो आपका पीसी और लैपटॉप में वेब साइनर यूटिलिटी इंस्टॉल करना है ये जो एम साइनर है एम साइनर आपका पीसी में इंस्टॉल करना है एंड मेरा आपका जावा शुड बी JRE8 32-bit ओनली देन यू हैव टू रिस्टार्ट योर पीसी और लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कीजिए ओके देन लॉगिन ट्रेसेस में लॉगिन कीजिए एंड गो टू प्रोफाइल ओके एंड गो टू सिग्नेचर आफ्टर दैट गो टू रजिस्टर DSC आपको जो डिजिटल सिग्नेचर है ना डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका लैपटॉप में USB पोर्ट में डालना है देन यू हैव टू एम साइनर यूटिलिटी इंस्टॉल कीजिए जावा 32-bit इंस्टॉल कीजिए आपका पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए एंड देन लॉग इन ट्रेसेस में लॉग इन कीजिए गो टू प्रोफाइल एंड गो टू सिग्नेचर एंड क्लिक ऑन रजिस्टर DSC ओके देन जो लास्ट आपने रिटर्न फाइल किया उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है क्या डिटेल्स एक टोकन नंबर और रिसीट नंबर एक चालान का डिटेल्स उस चालान का अंदर 3 वेंडर का पैन नंबर एंड TDS अमाउंट देन क्लिक ऑन सबमिट देन आपका DSC रजिस्टर हो जाएगा एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सो प्रोसेस नहीं आएगा सो आपको क्या करना है जो मैंने बताया वो आपको करना है
प्रोफाइल में जाकर सिग्नेचर पर देन रजिस्टर डीएससी पर क्लिक कीजिए एंड देन you have to provide your last return details here. Token number or receipt number. You have to provide one challan details and 3 vendors PAN number and TDS under that challan. Then click on submit. So आपका DSC register हो जाएगा. Okay? So ये था मोटामोटी traces overview मैंने cover कर लिया. And tomorrow at 7 p.m. I will share quiz link. We have a quiz session at 7 p.m. मैं आपको एक link share करूंगा. You have to attend the quiz. We have 3 prizes for 3 winners. Okay. So after the class, I will announce the winner's name. And one more thing, I will give you a tool. I will provide you a tool जिसका price है 1000, but I will provide completely free if you join tomorrow's class. क्या tool? ये suspense है. Tomorrow I'll discuss. And ये बहुत important है to file your income tax return. So if you join tomorrow's class, then I will provide you this tool. Otherwise, I will not give you. Okay. So you have to attend tomorrow's class. You have to attend. Quiz session. After the class, I will share the quiz link. And after the class, I will tell you about my other courses. If you want my lifetime support, कैसे आपको मिलेगा, I will tell you about that. Okay. I don't understand your question, Almas, Sarath. How to calculate TDS on Facebook lead? I have to check this. Okay, I will answer to our WhatsApp group. Okay, please. ये जो question है, please ask me once again to our WhatsApp group. Okay, let me check. I have to check this. ठीक है. Tomorrow I will tell you about all other courses. अगर आपको lifetime support चाहिए मेरा, जो पहले मैं जब करियर स्टार्ट किया था 15 years बिफोर, ऐसे कोई कोर्स नहीं था जो आपका नॉलेज के साथ साथ सपोर्ट भी मिले. सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड माय हमीद स्मार्ट लर्निंग हब. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट टुमारो. ओके. तो चलो गाइस, गुड नाइट एंड डोंट मिस टुमारोज क्लास. आज का रिकॉर्डिंग आई विल शेयर यू बाय टुमारो मॉर्निंग एंड डे 1 का भी रिकॉर्डिंग में अपडेट करके आज रात को मैं आपको सेंड करूंगा. ओके. Bye bye. Good night. Take care. Don't miss tomorrow's class. And if you have any question, please ask me on WhatsApp group. I will answer.